আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন রাকেশ रोशन के যে उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। हमें इस बात का गर्व है कि भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पर उतारने का उन्होंने सफल प्रयास है और हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है उनकी 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं और हमारा देश एक कदम और साइंस में स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी अच्छी बात है। चंद्रयान पहुंच रहा है तो भगवान का बहुत बड़ा कृपा रहा। चंद्र जो है देवता है, चंद्र उनका कृपा हुआ तब वो चंद्रयान वहां पहुंचा, और उनका कृपा नहीं होता तो चंद्रयान वहां नहीं पहुंचता। तो चंद्रयान तो मौसम का और ऊपर में अंतरिक्ष का जितना प्लैनेट्स है सबका वो पता लगाता है कि कहाँ क्या है। अच्छा, तो वैज्ञानिक लोग जो इसमें है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, तेज प्रताप, रिसर्च करते हैं। बीजेपी लगातार आप लोगों की जब से सरकार इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना की गई। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, और इनमें से जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 5-4 व्यक्तियों में जो शामिल हुए थे इनकोस्पार में, APJ अब्दुल कलाम थे। इसके बाद में 1969 में अगस्त के महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, उन्होंने इसरो की स्थापना की। 1972 और 1984 के बीच में सतीश धवन आए और उन्होंने, मैं समझता हूं, अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे, और ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान रहा है। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है, पर ये एक सिस्टम का है जहां लोग अपने टीम वर्क के साथ एक सामूहिक मानसिकता से काम करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की पार्टनरशिप भी जो भागीदारी है। Mr. Jairam Ramesh, thanks to Sonia's Congress, India's space research was held back by years, as can be seen from this clip. Mr. Jairam Ramesh, the Congress government even went ahead to get the spot where the moon impact probe of Chandrayan-1 crash landed on the lunar surface on 14th of November 2008. They named it after Nehru as Jawahar Point or Jawahar Sthal. Why? Especially when we have a rich and ancient legacy of astronomers and mathematicians. Can you please answer, Mr. Jairam Ramesh? You know, it is laughable. How can, who has given this right to Narendra Modi ji to make any namikaran at the surface of a moon? It is laughable. We have learned that it is very good. We are proud of it, no doubt in it. But I don't think that we are not the owner of moon, we are not the owner of that point. Because Bharatiya Janata Party is in habit to do all this. Since they have come in power, they have been changing names of... Mr. Alvi, I'm going to ask you, because when the Congress was in power, they named the point where Chandrayan-1 landed as the Jawahar point. That's the contention. They are saying that the Prime Minister has not named it after, say, like an Atal Bihari Vajpayee, or himself for that matter. Is what the BJP is saying. When you were in power, you also named the point as Jawahar Point.
You know, Jawaharlal Nehru, you can't compare Jawaharlal Nehru. He was whatever ISRO is, it is only because of Pandit Jawaharlal Nehru. In 1962, it was only Vikram Sarabhai and Pandit Jawaharlal Nehru who had established this ISRO. So, basically, you can say that Pandit Nehru was the founder of all this. That is absolutely a different thing. But now what Modi ji is doing, just he is trying to politicize it. Siyasi fayda uthana. I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year, but I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. Treated with the kind of utter contempt this kind of talk deserves, and it's not just coming from these white racists in Britain or Australia or wherever else. It's also coming from the so-called liberal BBC. Just 3 or 4 years back when the Chandrayan mission had failed, we've got that clip running around. So this disparaging attitude and this sneering attitude which these Brits have, is just too galling. But on the most substantive issues, number one, the government of India way back, I think in 2011 or 2012, under the Manmohan Singh government, had told everybody around the world, we don't want your aid. Yes. Okay? The Brits were not doing us any favor. They were doing charity out here, not because there was some altruism involved in it. They were doing it because they buy people out here, they buy their loyalties, they buy their lobbying thing. They want those people to lobby out here and disparage India. So please give me a break. Take your money and shove it up wherever you want to shove it up. Okay, number one. Number two, whatever monies they are giving right now, nothing is coming to the government of India. They are only giving it to NGOs which plug the line which the Brits want to do. And there is some of it which is going into business houses because they are trying to create markets and trying to create synergies between Indian businesses and British businesses. And the British themselves acknowledge that this money is being given because it creates jobs in Britain, it creates markets for Britain, and they are actually profiting from a lot of this money which they are giving to private sector people. The government of India is not taking a damn thing from these guys. So these guys should get their facts right and lay off. Now, on the other hand, I think it's also important to point out that because they don't have the competence to achieve the kind of scientific achievements that ISRO and many other Indians have, if they are feeling jealous about it, or they can't handle that a country which they colonized, they plundered, they pillaged, they looted, they raped, if those people are rising back and achieving things which these guys can't achieve and they're going back into the dark ages, learn to handle it, deal with it.